छोटी सोच, पैर की मोच। ट्रेडिशनल डे है तो घोड़ा नहीं, तो हाथी लेके जाओ, पालकी। ऊंट लेके जाओ, हाथी पालकी। लेके जाओ। और और वेदांत भाई आएंगे तो ऐसे वो बजेंगे। और वो छत्रपति शिवाजी महाराज का कैसा बजता है ना, श्रीमान श्री छत्रपति। ये ना सीन हो जाएगा भाई, नेक्स्ट लेवल का। एनीथिंग इन एक्सट्रीम, इट्स टू डेंजरस। क्या मतलब, घोड़े ने हक दिया तो साफ करना पड़ेगा? गेट अ anything in extreme, Vedan bhai. One, when it comes to peacocking and fashion, one has to really understand how much there is acceptable. It's a really important thing. Okay, I will give you another भाई example. वो मिस्ट्री का तो अलग ही होता था। मैं मतलब। Bro, but Mystery was a magician. It was suiting with his identity. हाँ हाँ, वो भी है, वो ट्रिक्स करता था तो उससे ही वो पूरा अटेंशन देता था ना। The click. But if you see the another person called David D'Angelo, हाँ हाँ। bro, have you द, seen the guy apart from formal anywhere? नहीं नहीं, उसका देखा तो नहीं है मैंने उसका। क्यों? अ, क्यों? उस उसको देखा नहीं है मैंने, उसका एक बुक था। आई थिंक Double सो। loyalty. हाँ हाँ हाँ। हाँ वही वही। नो, द गेम इज गुड इन दैट इट्स नॉट लाइक ऑल एडवाइस एडवाइस ही वगैरह। वो नील स्ट्रॉस एक्चुअली ऐसे एक स्टोरी सुनाता है कि मैं इसमें गया, ऐसे ऐसे लोग थे, एंड इट रिलेट्स टू आवर कम्युनिटी ऑल्सो, कि ऐसे ऐसे थोड़े अतरंगी लोग रहते हैं, ये होता है वो होता है लोगों का। I don't believe whatever that is written in that book is true. Sometimes they are all made up lies just to keep the audience engaged. अच्छा। Hmm. स्टोरी तो अच्छी है Do भाई। you think जितना स्टूपिड मिस्ट्री को बताया उतना वो स्टूपिड है? नहीं। जितना जितना इडियट आरएसडी टाइलर को बताया उतना वो इडियट है? फॉरगेट अबाउट द अनदर गाय, सबसे बड़ा नेगेटिव विलन दिखा दिया रॉस जेफरीज को। हाँ भाई। नॉट वो भी दिख। नार्सिसिस्टिक पर्सन, अच्छा। ही इज अ वेरी गुड हम्बल पर्सन, just because it has been conveyed in that way, according to the perception of Neil Strauss. ओ भाई ऐसा। Ah, हाँ this is like, I was listening to Michael Sutton. हाँ हाँ हाँ, वो फिट फ्रेश एंड फिट वाला ना। Because when that book was written, when the project Hollywood was going, I was there. And trust me, these people are not that stupid. But the people who are near to Neil Strauss was given more advantage in that book. अच्छा, तो नील स्ट्रॉस ने अपने करीबी वालों को फेवर मैं किया। किताब लिखूंगा तो वेदांत भाई की तारीफ ही करूंगा ना। हाँ भाई। ये वेदांत भाई एकदम वाहियात किस्म के आदमी को क्या फर्क गिरता है? और फिर मैं बोलूंगा विल रिकमेंड राज बुक 10 आउट ऑफ 10। भगवान तुम्हारा भला करे। मे लॉर्ड गिव यू 1000 ऑफ लेस विद 10 ऑन टेंस। दिल से अरे वाह। अच्छा अच्छा है भाई। ओके गाइस, वी विल स्टार्ट। Important element is now on 10 days we will be talking about not about fear, lack, insecurity, ये तो हम meditations करेंगे। पर इससे भी कुछ गहरे इनर इश्यूज होते हैं फ्रॉम अ मेंस पर्सपेक्टिव, आर रिलेटेड विद मास्टरबेशन, आर रिलेटेड विद pornography, related with prostitution, related with erectile dysfunctionality, related with condoms, related with eye peels, related with the kind of sex he enjoys in porn. These are the darker level of truths. But ये टॉपिक्स काफी बड़े, लाइक आई थिंक 15 days 20 days तक तो लगेंगे। द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज लाइक वी कैन कंटिन्यू, देन वी हैव टू फॉर जो 12 days का रहेगा उसमें हम 12 areas ऑफ लाइफ के ऊपर बात करेंगे, दैट सिंपल। आई एम ट्राइंग टू पुट दिस इन 15 days, which is related with masturbation, pornography, lot of other things are there, like
इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, मास्टरबेशन, राइट वे, रॉन्ग वे, डज इट इम्पैक्ट गेम, डज इट डजंट इम्पैक्ट गेम, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. तो आई विल अपडेट यू बाय टुडे बाय नाइट कि क्या करना है 10 दिन में. नाउ अगर अचानक से कोई आके टपक गया और बोल रहा है कि यार मेरे को कुछ नहीं समझ गया, देन हुज फॉल्ट इट इज. ही नीड्स टू गो थ्रू सर्टन लेवल ऑफ थिंग्स, बिकॉज दैट्स इम्पोर्टेंट. वेदांत भाई, आपका से एक सवाल था कि दाढ़ी खुजाती है, पैर खुजाता है, शरीर खुजाता है. बीटेक्स लगा. हाँ भाई, हाँ मतलब वो ऐसा थोड़ा छोटा नहीं रहता कि इग्नोर कर सकते, वो परसिस्ट ही रहता है, तो उसके ऊपर ही ध्यान जाता है ना ब्रेथ के बदले। आज विश्वा भाई नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता था. सो दिस इज आवर 7 डे. देखो, इन चीजों में आपको ये समझना है, एक जिंदगी में जो भी होता है वो भी बीत जाएगा. द गुड एक्सपीरियंसेस कम, द बैड एक्सपीरियंसेस कम, दे हैपन एंड दे गो. द मैन हु इज स्लेव, स्लेव जो होता है आदमी, वो क्या होता है ना, ही गेट इंडल्जेंट, उसका इंडल्जेंस होता है उन प्लेजर्स में, उसका ही गेट इन्वॉल्व इन दैट पे. जिंदगी में अच्छी चीजें होती है तो बहुत खुश होता है, बुरी चीजें होती है तो फिर बहुत दुखी होता है. या दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन चाइल्ड. ध्यान का एक ही महत्व है कि ध्यान कैरेक्टर में उतरे. ध्यान वो नहीं है जो 1 घंटा बैठ के कर रहे हैं, वो 1 घंटा बैठ के तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाहर क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है. मेरे जिंदगी में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं. तो इसका जो तुम्हारे सवाल का जवाब है कि भाई बहुत खुजली आती है, बहुत पसीना आता है, बहुत पेन होता है, फिर भी हम बैठे हैं ऐसा समाधि में, क्या करना चाहिए. देखो, वो जो पेन है, वो जो सेंसेशन है, वो पीड़ा है, वो कुछ वक्त तक आती है और आप देखोगे थोड़ी देर बाद वो चली जाती है. अगर मुझे यहाँ पे बहुत खुजली आती है तो 5-10 मिनट आती है और फिर वो निकल जाती है. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. और हमको ध्यान में वही इंपॉर्टेंट, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है. तुमने विपासना किया नहीं, लेकिन जब तुम विपासना करोगे तो इन चीज को तुम प्रैक्टिकल लेवल पे समझोगे. गोविंद सत्यनारायण गोयनका गुरु जी का एक बहुत अच्छा कहानी, मेरा नहीं, उनका. दो भाई रहते, एक बड़ा रहता है, एक छोटा रहता है. उनका एक बाप रहता है जो मर जाता है. तो जहां पे वो मरता, तो वहां पे एक छोटी सी पोटली रखी हुई थी, उसमें 2 अंगूठी रहती है, एक हीरे की, एक चांदी की. तो बड़े भाई के मन में एक लालच आता है. तो वो सोचता है, वो लालच की वजह से अपने छोटे भाई को बोलता है, ये हमारे बाप दादाओं की संपत्ति नहीं है, मतलब कमाई हुई संपत्ति नहीं है, ये पूछते नहीं है. घर का बड़ा होने के नाते ये मैं रख लेता हूँ, आई विल कीप दिस, यू कीप ऑफ सिल्वर. एंड younger brother says, why to get into arguments for such a little thing? If you are happy with diamond one, be happy with that. Then, after living from there, he thinks that my father has kept the diamond ring. It's understandable. But with that diamond ring, दोनों अंगूठियां ऐसी ऐसी होती है. With that diamond ring, why he has kept the silver ring? Then he observes that ring very closely and he sees that there is something written. And in that it is written, this too shall pass. ये भी बीत जाएगा. तो for the younger brother, whenever there comes the movement of happiness, success, pride, ego, validation, approval, it's not that he don't enjoy those pleasures, he enjoys, but he keeps himself in that illusion. ये भी बीत जाएगा, this too shall pass. छोड़. और जब जब whenever there are the movements of sad, misery, pain, he doesn't get indulgent in those pleasures, but he keeps reminding himself, this too shall pass. And he just become an observant. What we learned on yesterday and day before yesterday. Those who are attending first time, humble request, go to all those things. Otherwise, you won't align. It will completely out of syllabus. For the elder brother who has the diamond ring, you know what happens with him? Whenever the happiness comes, he will laugh.
whenever there is a validation, approval, and justification for him, he'll like have a huge ego and pride. But whenever the things doesn't go as per his will, as per his desire, as per his expectation, he cries, he yawns the pains because the attachment is too high. And that was happen slowly and slowly. Everyone have those phases in life. No matter you get late thousands of times or you don't get late, you will have that movement in life. Whether you have sex with thousands of women or you don't have, you are still a virgin of 50 years age. You will have two moments in life. You will be happy and you will be unhappy. But if you have made your sadhana very good, if you have made something, you won't get psychologically mad when the things go right, and you don't get too much caught up. Like You will be unaffected. it's like, and trust me, there is a circle of life. If happiness has come to you, if the pleasure has come to you, misery will come. It's two sides of the same coin. If you have got too much of pleasures, you will have the misery because someday you will be old, someday you will have a problem. That's the truth of life. If you have been too much attached to your desires and you have accomplished something, soon something will happen that you won't be able to achieve something. That's what we call freedom within. That time, this always remember, this too shall pass. ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा. Just be observer. Now coming back to Vedanta, what if there is itching sensation? See from it observing thing, this too shall pass, but don't get too much craving into that. What will happen? It will change slowly, slowly, steadily, with lot of practice of 30 days, 45 days, 60 days. You will come to that zone where you will come to understand that this too shall pass. If you are having a good time with 10 on 10 women, you will be in that observant zone. This too shall pass. So I don't worry. Even next day it is flick. You don't cry, man, like a man child, fucking stupid idiot. And if you get laid, you will understand. Oh, I am enjoying this, but this too shall pass. Again, the misery will hit me back. The pain will hit me back. You will be, and the life will be, Stoicism philosophy. But Stoicism philosophy is a philosophy. It has no practical implementation. That's the reason I think that the philosophy without the practical implementation is bullshit. So when you are in a Adishtan, go to a Adishtan. Bro, लेके टाइम पे वो सोचा तो मजा कम हो जाता है. No, no, it's not. As a man, you have to act, you have to perform, you have to enjoy. When you dance like a mad person, but there is thing called attachment. You have to. How many people know Gaur Gopal Das Maharaj, the wonderful monk of ISKCON? ISKCON. Have you heard him? उनके वीडियोस मेरे पापा बहुत देखते हैं. Ah. So he has a wonderful book called Life's Amazing Secret. And I consider myself very fortunate, very divine, very blessed that I have seen him live 3 times. I haven't met him, but I had just touched his feet. Why necessarily bore him with a lot of questions? Right now, those people are 10 times bigger than me. 10, 100, lakh, 1 CR times bigger than me in terms of, I am not even a single drop. The type of sadhana and practices they have done. I'm not even the single drop of the ocean that they have enhanced themselves in the spiritual practices and sacrifices. I'm just a normal, stupid person. But when it comes to those things, he said a wonderful thing. ये जो आपका सवाल है ना, the question, bro, लेके टाइम पे वो सोचा तो मजा कम हो जाएगा. No, coming from intellect, not coming from experience. मजा कम नहीं होगा, मजा ज्यादा आएगा. क्योंकि when you set the desire, when you set the goals, when you make that blueprint, you work. When you work, you get fully involved. At that time, don't get that philosophy of Bhagavad Gita. कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर. नहीं, जिस समय आप कर्म कर रहे हो, उस समय उस क्षण में वो आउटपुट भी आपकी ही जिम्मेदारी है.
Now, when you are having sex with woman, your core responsibility is to pleasure, to give that woman immense pleasure that no man can dare in life to give. Now, don't think what I am getting, what she is getting. That is the first important thing. What level of penetrations I have, that's not important. What level of pleasure she's reaching the potential, that is number one. क्योंकि वो आप खुद के भाव से नहीं कर रहे हो, और वो तो ही करेगा जो सच्चा तपस्वी है। पहले तो तपस्वी करेगा नहीं, like for him that pleasures are very nonsense. But being myself as a gamer, being myself as a coach, I took only from, हम भोगी लोग हैं, we are not yogi, we try to learn from yogi. Ah, of course, I am a bhogi man. I'm not a yogi. Just because I'm in this getup doesn't mean, just because I'm talking about the spirituality doesn't mean that I'm a spiritual person. I am not. I have came into spirituality to improve my inner game. Correct? ये बात सच है ना? बहाना कुछ? हाँ भाई बिल्कुल सच है। हाँ, बिल्कुल सच है ना? तो मैं सिर्फ वो चीजें सीखता हूँ। आ, आ, तो वही आपका भाई आपका वो, तो मेरे को बताओ, आपका वो 26 27 के थे आप जब आप इतने इतने सारे कोर्सेज वगैरह किए थे और रिलीजियस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे, फिर आप गेम में आपका शिफ्ट कैसे हो गया वो, कि योगी के पर्सपेक्टिव से भोगी के पर्सपेक्टिव में? गेट द लीड, दैट वाज द पर्पस। मुझे इतना तो पता था कि इफ आई नीड टू work on something. See, for example, I started with self-help. I was a very desperate and desired person like you to attach to the outcome. Then I started reading. The first motivational speaker in my life was Shu Khera, You Can Win. Then I brought all his books, started reading, attending courses, then one course after another course. Then I used to think if you want the best, you have to be the best. There is no other way. Then I started hitting gym. I started living a mad psychological personal development junkie. Then what happened? It started giving me a huge pain in my life, एंड दैट पेन, आई थॉट कि अभी ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर। देन समवन सजेस्टेड मी स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। बॉब प्रॉक्टर वाज द फर्स्ट पर्सन who explained me that, and he has the wonderful book called Become a Magnet to Money. That was the third book in my life that I read, fourth book in my life. Then he said about the consciousness, the paradigm shift, the inner reality. Then I started to understanding. Then I read another book called The Monk Who Sold His Ferrari. Then I started watching Robin Sharma. Then I understood the importance of meditation. Then I started enrolling. Then I started to doing the meditation by my own self. Then Sandeep Maheshwari came into my life. Then I started practicing his meditation. Then someone suggested me people have their own preconceived biasness. Instead of doing good, it can do more harm if you keep on doing by your own self. Because meditation करते करते मैं पागल होने लग गया था। तो फिर मैं ब्रह्म कुमारी में गया, स्वामी नारायण में गया, इस्कॉन में गया। फिर मैं सोचने लग गया सेक्स तो पाप है। फिर हाँ मैंने भाई, तो हाँ। समय बीती, ओके। पर मैं अंदर से खुशी नहीं था। फिर मैं स्वामी विवेकानंद पढ़ता था, लोगों को फिलॉसफी देता था, और मैं सबसे डार्क पॉन देखता था। मैं लोगों को बोलता था कि लड़कियों का इनके बारे में नहीं सोचते रहे, बी सक्त ब्रह्मचर्य, निस्वार्थ सेवा, त्याग। ये स्वामी विवेकानंद के मोटिवेशनल लेक्चर्स में देता था। और एक्स हैमस्टर, पॉन हब, नॉटी अमेरिकन के पेड सब्सक्रिप्शन रहते थे मेरे पास। मैं इतना बड़ा झूठा और दोगला इंसान था। अरे भाई, पेमेंट भी कर दिया। वो ऐसा रहता है कि जो दबा के रखते हैं वही बाहर आता है ना। ऐसा रिप्रेस्ड डिजायर्स विल कम आउट। अभी चाहिए तो चाहिए भाई। मेरे के अंदर कोचिंग का भी ईल्ड था। मैं सोच रहा हूँ मैं इतना अच्छा काम कर रहा था, मैं क्यों लोगों को पैसे मांगू। ये मेरे कोच ने क्लियर किया। अरे भोसड़ी के, एक चमाट मारूंगा तेरे को। पीपल हैव टू इश्यूज, वन इज द गिवर एंड वन इज रिसीवर। when you are too much of giver, you are going to lose, and you can never be rich. The richest people are good receivers, they are not good givers. The people who have changed the world are good givers. Ratan Tata is good giver, Mukesh Ambani is good receiver. I'm not here to judge them, they are 10 times people better than me. Ashin Kurein, can you please off भाई, रिकॉर्ड हो जाओगे तुम। ठीक है फिर भाई, आपका जो ये था ना, जो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद वाला फिलोसॉफी था, दैट दिस इज बैड,
लेज आर बैड एंड दिस एंड नॉट, फिर उसमें से आप गेम में कैसे फिर आ गए? आपको रियलाइज हुआ कि वो हमको हेल्प नहीं कर रहे इंटरनली? हाँ ब्रो, एक्सपीरियंस से सीखता है ना आदमी। अच्छा, ठीक है ठीक। पीपल लर्न फ्रॉम देयर पेन, पीपल लर्न फ्रॉम, मैंने अपने आप को झूठ बोला है भाई। गेम में काफी लोग अपने आप से ही झूठ बोलते हैं, बहुत है ऐसे अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। हाँ मत, हाँ, आई एम हियर टू सोशलाइज, आई एम नॉट फॉर लेज, ऐसा ना? हाँ, ऐसा झूठ, कुछ और हाँ। तरीका झूठ। मेरे कुछ स्टूडेंट है, मेरे से बूट कैम्प लिया है और लोगों को बता रहा है मैंने राज को बूट कैम्प दिया है। भाई क्या सिद्ध करना चाहते हो? इज दैट प्रॉब्लम टू से स्पीक ऑनेस्टली? मैं अपने आप से सच बोलता हूँ भाई, मैंने 2 साल गेम किया और मैंने हर एक कोच को पैसा दिया है, कर्जा ले लेके पैसा दिया है, अपने गले की चेन अंगूठी गिरवी रख के पैसा दिया है, और मेरे को 2 साल तक डे 2 तक नहीं मिला। डे 2, डे 2 समझते हो ओ वेदांत? भाई, मतलब नंबर क्लोज के बाद सेटअप करके वापस एक मीटअप ना? हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट डे ओके। मिलने। क्या मैं झूठ बोलूं इन चीजों को? अरे आ जाओ। रिजल्ट्स वेरी होते हैं गेम में, इसलिए मुझे मूर्खों का बादशाह बनने में कोई शौक नहीं। कम लोग हो, 5 लोग हो 500 से ज्यादा, लेकिन पैसा 500 से ज्यादा ही दे मेरे को वो 5 लोग। हाँ, मनी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जो है वो है। बी ब्लंट एज अ मैन, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। बी ब्लंट, बी स्ट्रॉन्ग। इन शॉर्ट, there can be a problem, there can be a pain, but your reality, your congruency will be strong, will be powerful. In long run, you will only win. That's truth. भले ही आप ध्यान करो ना करो, सुअर का मांस खाओ, कुत्ते को काट के खाओ, जो करना है वो करो, वो शराब पियो। And if you are in that thing now, I would suggest read the book, The Radical Honesty. Very good book. Read the book, प्रैक्टिकल। Honesty. Very good book. And it's recommended by RSD Derek. उसका भी प्रोग्राम खरीदा था मैंने, 10 कमांडमेंट्स ऑफ गेम, वो नेशनल एंथम था उसका भाई, आरएसडी का। नेक्स्ट लेवल शिट। उसका वो ऑनलाइन कोचिंग देता था या उधर जाके ऑफलाइन लिया था, फॉरेन में जाके? नहीं 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 ब्रो, इतना पैसा कहाँ है भाई? ये यार, देर आर सर्टन पीपल, जिंदगी में अगर मुझे जुआ खेलना है तो मैं खेलूंगा, एंड टू मीट देम फॉर 1 or 2 hours आई वुड डेफिनेटली लव टू गिव हार्डकोर अर्निंग्स। और इट्स लाइक द बिगेस्ट, देयर वन इज जेन पिरियन, द अनदर इज जेम्स मार्शल। 2 लोग तो ऐसे हैं जिनके लिए आग बंद करके मैं ऐसा दे दूंगा, बिकॉज आई रिलेट विद देयर फिलोसफी। क्योंकि इन लोगों ने अपने अंदर भी काम किया है, सिर्फ बाहरी काम नहीं किया। बाकी आई डोंट नो, क्योंकि स्क्रीन पे कुछ और होता है, रियल में कुछ और होता है। समझ रहे हो ना? हाँ भाई। तो 2 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है, कोई स्पिरिचुअलिटी करो मत करो कुछ करो, ऑनेस्ट रहना है अपने आप से। देखो, व्यवहारिक जगत में झूठ बोलना पड़ता है, हाँ हाँ, वही मैं सोच रहा था कि भाई ऑनेस्टी। झूठ ना बोलना कभी। बहुत से लोग होते हैं खुद को ही धोखा दे रहे हैं, उनको समझ भी रहा है, लेकिन वो खुद को धोखा देने में इतने व्यस्त हो गए कि अभी वो खुद से सच भी नहीं बोलना बोलना चाह रहे। एक ये चीज हमेशा ध्यान रखना। दूसरी चीज, कभी अहंकार मत आने देना। ईगो इज द बिगेस्ट एनिमी। ईगो के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। ईगो, ऑलवेज कीप लर्निंग एज अ मैन। चलो गेम मैंने सीख लिया है तो ठीक है, मैं कुछ और सीखूं, कुछ और सीखूं, कुछ और सीखूं, कुछ और सीखूं। लर्निंग मरते दम तक, ऑलवेज इन्वेस्ट। इसलिए नहीं कि मैं कोच हूं, ये कहना बहुत बड़ा झूठ रहेगा, अरे मेरे में ही करो। नहीं भाई, जिससे आप अलाइंड होते हो उससे करो, कोई बात नहीं। इफ यू फाइंड that this person is genuine, honest, and he can solve my problem, I was like, whether you want to become or not, that's another thing. Whether you find that okay, I don't want to invest in game, I don't want to invest in boot camp either, I don't want to invest in pickup and boot camp in teaching, I want, मैं किसी पर्सनल सेल्फ डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं किसी मोटिवेशनल सेमिनार में, दैट्स फाइन।
Invest in upgrade, invest in simply learn, invest in biggest education program if you are a working professional, but invest till you die. Invest in certifications. What the problem with it? शायद मैं, हो सकता है मेरा अपना खुद का बायसनेस है जो मैं ये बोल रहा हूँ. We should be like Ravan, have Lord Shiva and also enjoy the girls. No bro, रावण का इंटेंशन गलत ही था. रावण का एटीट्यूड सही था, तपस्या सही थी, वो चीजें उनकी सीखने लायक है. उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है, क्योंकि उसका इंटेंशन ही गलत था स्टार्टिंग से ही. चित्त को हमारे टीचर कहते हैं, गोयंका गुरुजी कहते हैं, चित्त को एकाग्र करके, ध्यान करके, साधना करके बड़ी सी बड़ी चीज भी कर लोगे आप, लेकिन अंत बुरा ही रहेगा. जीतना है, लेकिन एंडिंग इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. रावण, हिरण्यकश्यप, कंस, एज लाइक इनको भी भगवान की प्राप्ति हुई, इनको भी वरदान मिला, लेकिन इनके स्टार्टिंग से इंटेंशन, अपना इंटेंशन हमेशा क्लियर रखो. ऐसा है तो ऐसा है. याद है हमने हमने स्टार्टिंग में गजानन महाराज की कहानी बताया था मैंने आपको. नहीं देखा है तो देख लो. वो कहते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कहानी. शेगांव के बहुत बड़े संत है गजानन महाराज. व्यापारी वाला ना आता है उनके पास। कितने लोगों ने नहीं सुना? नहीं तो मैं रिपीट नहीं करता ये कहानी. यस नो कुछ टाइप करो, आर वाले रिपीट करो, एन वाले नो करो, वोटिंग बोल. नो, 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 नो. चलो ठीक है, काफी है. शेगांव के बहुत बड़े महाराज है संत गजानन महाराज. एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता है, और ये मेरे लाइफ का प्रिंसिपल है. मैं सबसे झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन जब मैं मंदिर में होता हूँ और मैं ध्यान करता हूँ और मैं भगवान के सामने होता हूँ, मैं हमेशा उनको देख के, यहाँ पे भी फोटो है ऊपर, मैं ये बोलता हूँ कि इनसे तो मैं कभी झूठ ना बोलूं, कभी नहीं बोलूंगा. ऐसा है तो ऐसा है. पैसा चाहिए तो पैसा चाहिए, लड़की चाहिए तो लड़की चाहिए, आई डोंट गिव. जितना है उतना ही है. और ये भी बोलता हूँ कि मैं एक नंबर का तुच्छ और गिरा हुआ आदमी हूँ भाई, बाकी तुम संभालो. हाँ. तो शेगांव के बहुत बड़े संत है गजानन महाराज. उनका एक कहानी है, एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता है जिसके पेट में कैंसर हो जाता है. देयर इज कैंसर इन हिज स्टमक. So when he has the cancer, he tries with lot of Hakim, lot of Vaidya, and lot of top-notch people. The doctors and surgeons at that era is like उनका 90s का era 1800 सेंचुरी का वो era. तो but he is fed up. So his wife come to know about Sant Gajanan Maharaj, and she said to the husband, like, I have heard the name of this divine person. He is naked, fakir, and he heals lot of people. And the ego, the intellect, the thought comes in between. इसका अहंकार आ जाता है, मतलब इसका रैशनैलिटी, इसका प्रैक्टिकलिटी आ जाता है, और वो बोलता है इतने वैद, इतने हकीम, इतने बड़े बड़े विद्वान लोग कुछ इलाज नहीं कर पाए इस कैंसर का, वो नंगा फकीर क्या कर पाएगा. पर उसके वाइफ की एक आस्था होती है, उसका एक भोलापन होता है. और जो भोलापन होता है, तो वो बोलती है कि चलो ठीक है, ये तो आने वाले है नहीं, मैं ही चली जाती हूँ. तो घर पे हस्बैंड को बता देती है कि मैं मायके जा रही हूँ, मैं आऊंगी 8-10 दिन बाद. और वो फिर वहां से शेगा हो जाती है, और फिर गजानन महाराज से मिलती है, और गजानन महाराज को बोलती है कि मेरे पति को कैंसर हो गया इतने. और वो बोलते हैं, जब अपना तर्क खत्म हो जाता है ना, तभी ईश्वर की याद आती है. और वो ऐसे एक आम खाते हैं, ऐसा उनके पास आम है, ये शंख है, ऐसा आम खाते हैं, फूकते हैं, और बोलते हैं ये ले झोली में तेरे, खिला दे उसको, हो जाएगा वो ठीक. और वो चली जाती है. अभी वो बेचारी घर पे जाती है तो वो सोचती है कि इनको ऐसा बोलूंगी तो ये खाएंगे तो नहीं, तो इनको मैं किसी रस में मिला के दे देती हूँ. तो रस में मिला के देती है, जैसे वो आम खा लेते, वो रस वगैरह खा लेते, फटक से ठीक हो जाते. वो बोलते चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, भगवान 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 करते रहते हैं. फिर ये औरत बोलती है ये भगवान का चमत्कार नहीं, ये उस औलिया का चमत्कार है, मैंने तुमसे झूठ बोला था. फिर बोलते अरे रे बाप रे बाप, कितना बड़ा पाप हुआ मेरे से, मैंने इतने बड़े संत विद्वान आदमी को ऐसा भला कुछ बुरा बोल दिया अपने तर्क के, क्योंकि ये तर्क के वजह से ही मैं धनवान बना हूं.
ये तर्क के वजह से ये मान सम्मान मिला है, ये लॉजिक, ये प्रैक्टिकलिटी, और इसमें ही मैंने हमेशा ईमानदारी बरती है। आज मेरे को समझा क्या होता है डिवाइननेस। और वो बोलते हैं चलो सब छोड़ो, अभी गजानन महाराज के दर्शन करते। तो वो दोनों मियाँ बीवी जाते हैं और दर्शन करने बैठ जाते। और वो तो अउलिया रहते, संत रहते, वो तो गिरते नहीं इन तर्कों वर्कों में। बट वो दिस दे कैन सी द ट्रांसपेरेंसी कि इस पर्सन ने मन। और वो बोलते हैं कि महाराज ये देखो हीरे जवाहरात चांदी, मेरे जिंदगी की सारी जमा पूंजी मैंने आपके चरणों में डाला है, आपने मेरी जान बचाई। महाराज एक एक हीरा देखते और लात मारते और बोलते, तर्क ने, तुम्हारी रैशनैलिटी में, तुम्हारी प्रैक्टिकलिटी ने तुमको धनवान बनाया है, तुम उसको क्यों छोड़ रहे हो? तुम उसके प्रति ईमानदार रहो, तुमको बहुत कुछ मिलेगा। वो उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो भावनाओं में बह गया। वो ठीक हो गया ना, वो और एक्साइटेड हो गया। और फिर वो बोलता है कि सारी संपत्ति सोचने के पहले हमेशा बोलने के पहले हमेशा सोच लिया करो। हाँ महाराज, सारी संपत्ति, सारी जीवन की जमा पूंजी। बोले सोच ले एक और बार। अरे हाँ महाराज, ईगो आ जाता है, एक अहंकार आ जाता है। हाँ महाराज। मैंने वो फिर वो हंसते हैं, बहुत हंसते, बोलते क्या हो महाराज? बोलते तू मुझे क्या समझा है? तेरा वो व्यापारी जिससे तू व्यापार कर लेगा। तो बोलते मैं कौन हूं पता है ना तुझे? तो उसको फटाक से ईश्वर दिख जाते हैं एकदम। भाई ये तो कोई डिवाइन पर्सन है एकदम, बिल्कुल सब ब्लैकलैश में उसको। और एक सेकंड के लिए उसको बल्ब ऑन मूवमेंट हो जाता है उसका। और उसको रात का किस्सा याद आता है जब वो सब हीरे जवाहरात अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह सब जमा करता है उस बैलगाड़ी में। तो उसके मन में एक कपट आता है। और वो कपट ऐसा आता है कि महाराज ने अपना कैंसर ठीक तो किया है, लेकिन एक प्रैक्टिकलिटी, एक रैशनैलिटी, एक 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 व्यवहारिक सोच भी होती है ना। तो वो क्या करता है, उसमें से थोड़ा सा वन फोर्थ हिस्सा रख लेता है। और वो मन में बोलता है कि महाराज को थोड़ी ना पता मेरे पास कितना है कितना नहीं। तो महाराज बोलते हैं अभी मैंने तेरे को जिंदगी तो दी है, तू 100 साल जिएगा, मृत्यु तेरे क्षण नहीं आएगी जब तक तू 100 साल का नहीं होता है। लेकिन आज के बाद तू दरिद्र रहेगा और तू पूरी जिंदगी गरीबी में जिएगा। तू अगर मेरे पास में सच्चे मन से आया रहता था और एक दाना अनाज का लेके आया रहता था कि महाराज मैं बहुत स्वार्थी, बहुत लालची, बहुत कपटी आदमी हूं, पर मैं आपका ऋणी हूं, इसलिए मैं आया हूं और मैं सिर्फ एक अनाज का दाना दे सकता हूँ आपको, जितना धन तेरे पास में है उससे दुप्पट 100 गुना दिया रहता था। लेकिन तू ईश्वर को ही फंसाने लग गया। मतलब यू लाइक टू गॉड। तो भाई जो भी है ईमानदारी से बोलो। अगर नहीं भी होता है इम्प्लीमेंट तो ये भी बोलो। That's how the intention is. If your intentions are wrong, be clear with your intention. I have lied myself a lot. I have fooled myself a lot. और इस फूलिंगनेस के हिसाब से मैं जब कर्जा लेके कोचेस को देता था तो मेरे को बहुत दगा मिला। मैंने 3 से 4 लाख इन्वेस्ट किया अलग अलग बूट कैंप्स में, कोचेस में। मैं नाम नहीं लूंगा उनके, आई डोंट हैव घृणा टुवर्ड्स देम, दे आर गुड पीपल। बट उसमें बहुत से लोग फ्रॉड निकले, फेक निकले। क्यों निकले पता है? क्योंकि मैं अंदर से फेक था, मैं अंदर से कपटी था, मैं अंदर से समझ नहीं पाता था इन चीजों को। बिकॉज यू यू हैव द पीपल इन योर लाइफ हुम यू आर। आपके दोस्त आप खुद होते हो। बी क्लियर विथ योर इंटेंशन। ये है तो ये है, ये चाहिए तो ये चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। कमिंग बैक टू दिस इज ऑल मेंटल मास्टरबेशन। साधना नहीं करेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, 3 बातें हमेशा ध्यान रखो। ऑलवेज, ऑलवेज एंड ऑलवेज बी क्लियर, डोंट लाई टू योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। कोई साधना नहीं करोगे, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं करोगे, कोई दिक्कत नहीं।
नथिंग मैटर्स बट बी ऑनेस्ट। इसलिए हमको जर्नलिंग भी स्टार्ट करना है, जो हम बाद में स्टार्ट करेंगे। सेकंड चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑलवेज इन्वेस्ट। फर्क नहीं करता है कि आपको बिल्डिंग नहीं सीखना है, पिकअप नहीं सीखना है, कोल्ड अप्रोच नहीं सीखना है, पर्सनल डेवलपमेंट नहीं सीखना है, किताबें नहीं सीखना है। आपको आपके करियर में ग्रो करना है तो वहां पे इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया तो पीएचडी करो, पीएचडी हो गया तो रिसर्च पेपर में इन्वेस्ट करो, रिसर्च पेपर हो गया तो गूगल के बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करो। बट एटलीस्ट ईमानदार रहो, मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, करियर चाहिए तो करियर, पैसा चाहिए तो पैसा, लड़की चाहिए तो लड़की, लेकिन जो भी आपको ईमानदारी से चाहिए उसमें इन्वेस्ट करो। झूठ मत बोलना अपने आप से। किसी कोच से, किसी से बोल दिया तो ठीक है, व्यवहारिक जगत होती है, हम कल कौन सा सतयुग में रहते हैं, कलयुग में रहते हैं। ये ऑलवेज इन्वेस्ट एंड ऑलवेज कीप लर्निंग। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ यू हैव डिसाइडेड विथ फर्स्ट टू थिंग्स, द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, एक तो मैं करूंगा नहीं तो मैं करूंगा ही नहीं, दैट सिंपल। अगर मैं जिम में हूँ, मैं पिकअप में हूँ, तो मेक श्योर दैट आई विल इन्वेस्ट एवरी टाइम फॉर माई लर्निंग, फॉर माई ग्रोथ, माई। जब मैं बोलता हूँ कि आई यारे यू मस्ट इन्वेस्ट, तो मेक श्योर दैट आई हैव इन्वेस्टिंग एटलीस्ट 10 times वॉट एवर आई एम टेकिंग फ्रॉम अ सिंगल क्लाइंट। दैट्स सिंपल। अगर आप बेसिक सी चीज भी कर रहे हो ना, डेटा साइंस सीख रहे हो, या फिर कोई ये कर रहे हो, या फिर कोई साला सा फालतू सा नर्सिंग का कोर्स कर रहे हो, या फिर कोई एडिटिंग का वर्कशॉप कर रहे हो, बी इन्वेस्ट। जितना है उतना ही करूँ, 10% करूँ, 5% करूँ, 1% करूँ, बट इन्वेस्ट करूँ। क्योंकि वो चीज ने मुझे अगर 10 रुपए दिया है तो मैं उसको 1 रुपए तो भी इन्वेस्ट करूँ। वरना आपका ग्रोथ रुक जाएगा, ईगो पकड़ लेगा। पता है सब कुछ, फ्री में तो मिलता है सब कुछ, वैल्यू इंटेंशन गलत हो जाएगा, वो विद्या फलदायी नहीं होगी। और ये मेरे टीचर एसन गोयंका ने सिखाया कि वहां पे एक विधि होती है, डोनेट करो, ये करो, वो करो, लाइक। चलो, इनफ ऑफ मेंटल मास्टरबेशन, कम टू द पॉइंट। और एक ही चीज करो तो अच्छे से करो भाई। मेक इट, कवर इट टिल यू फिनिश इट, अदरवाइज डोंट डू इट, दैट्स फाइन। मे बी अपना कप ऑफ टी नहीं था वो, बट कोई भी चीज हाफ हार्टेड डेफिनेटली मत करो। दिस इज समथिंग दैट वी आर इन दैट। 1 डे किया है, 3 डे, 3 डे किया है, 5 डे, 5 डे किया है, 7 डे, 7 डे हमारा शुरू है। वी आर ऑन द वर्क फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट विद 10 days, 12 days, 15 days। 10 days में हम सिर्फ, मोस्ट प्रोबेबली हम सिर्फ करेक्शन पोस्चर्स ही करने वाले। दैट्स सिंपल। नाउ इफ यू हैव मिस समथिंग, डोंट वरी, डू एज पर योर ओन टाइम। कर रहे हो तो अच्छे से करो, नहीं तो करो ही मत, दैट सिंपल। अपने टाइम के, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करो, सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे। ये हमको है 10 days में फॉलो और अप्लाई करना है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन अगेन। आसाराम बापू की साधना कर लो, नित्यानंद की कर लो, राम रहीम की कर लो, वो भी आपको फल देगी। भले ही वो कल्प्रिट है, लेकिन आपने उसको अगर ईमानदारी से किया है। ये मेरे को मेरे टीचर ने ही समझाया था, क्योंकि मैं बहुत जज करता था। बोलते इससे फर्क नहीं करता आप कौन सी साधना करते हो, कितनी वियर स्टूपिड चीज करते हो, आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। साधना में बल नहीं होता है, आपकी क्षमता में होता है, आपकी तपस्या में होता है, आपके इंटेंशन में होता है। This is something fear, insecurity, lack, jealousy. This we have already covered. Now we will come back to revenge and hate. Now, just make sure आपकी प्रोटोकॉल शीट हमेशा खुली होना चाहिए। दिस इज ये है, मेरी शायद ऊपर है, एक सेकंड। हाँ, वो प्रोटोकॉल शीट होनी चाहिए जो मैंने सिंगल पेज की भेजी, वो देख लेना। ये है आपकी प्रोटोकॉल शीट। इस पे हमको लिखना है पेंसिल से अपना प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें कोई डाउट? क्लियर है? इसमें प्रोटोकॉल लिखना है, ये लिखना है। और ये हुकुनो कोनो की एक मैंने शीट भेजा है सेपरेटली। जब मैं 400 days की वो जर्नल और वर्कबुक कंप्लीट करूंगा तो वो आपको मिल जाएगी, बट मेक श्योर वो तभी काम की है जब आपने किया है। ओके, इट्स लाइक। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं इस रिचुअल से। फिर हमको 12 एरियाज ऑफ लाइफ के लिए हमारे गोल भी सेट करने हैं, क्योंकि ऐसा ना हो जिंदगी में ये चीज मिल गई तो ये चीज अधूरी लगने लग गई, ऐसा ना हो।
इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, दैट्स द रीजन इट्स 400 days। ये हमको अप्लाई करना है। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी आर ट्रू की, और ये हमारे सेशन के टाइमिंग होते हैं। ओके गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं एडवांस में। प्रोटोकॉल शीट ओपन है, पानी का ग्लास ओपन रखना हमेशा। फिर हम बाकी चीजों के ऊपर और बात करें। मेरा आवाज आ रहा है? भाई ग्लास अनकवर्ड होना चाहिए। हाँ, अनकवर्ड होना चाहिए। वैसे मैं रखता हूँ ये पिरामिड है, पिरामिड। हाँ। और ये पिरामिड भी कोई भी पिरामिड काम का नहीं होता है। इसके ऊपर हम सीखेंगे जब हम 30 days में जाएंगे, अभी नहीं। अभी नहीं। ज्यादा ज्यादा सीखो, उससे कम सीखो, ज्यादा अप्लाई करो। और ये आपको भी बनाना पड़ेगा। ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। इसका एक इंटेंशन रहता है। इसमें कॉस्मिक एनर्जीज रहती है, एक 51.51 डिग्री पे बनता है। इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और ये अंधविश्वास ना बन जाए आप में जिंदगी में कि कोई पिरामिड रख रहा है तो मैं भी रखूं, तो आप जिंदगी के सबसे शिट इंसान हो। आपको उसको एक्सपेरिमेंट करना है, आपको उसको देखना है, आपको उसको जांचना है। और वो आपके बिलीव्स पे, आपके रियलिटी पे, आपके लॉजिक पे, आपके साइंस पे वो खरा उतरे, तो ही उसको अपने आचरण में लाना है, नहीं तो नहीं लाना है, नहीं तो वो बकवास है। तो ये जो है, इसके पीछे का एक साइंस होता है, ये साइंस समझना पड़ता है। ये समझना पड़ता है पिरामिड्स क्यों बनाए थे। पिरामिड्स बना था गीजा में, इजिप्ट में। इसलिए बना था क्योंकि कुछ रॉयल फैमिलीज थी, उनकी डेड बॉडीज दफन की जाती थी, और वो दफन की हुई बॉडीज वो ज्यादा प्रिजर्व्ड होने चाहिए थी। तो ऐसा होता है कि जब वो एक एंगल, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पिरामिड बनता है, और उसके नीचे में कोई एक फल रखो, और एक फल ऐसा खुला रखो, तो देखिए ये खुला हुआ फल 2 दिन में सड़ गया, और ये जो है ये 10 दिन में नहीं सड़ा है। ये जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो ही काम का है, नहीं तो ये अंधविश्वास है। धोखा दे रहे हो अपने आप को। अरे कहाँ गया? हाँ, चलो। चलो स्टार्ट करते हैं ब्रो अपना प्रोसेस। मेरा यार शीट ही नहीं दिख रहा है, तो मैं इसमें देख के बोलूंगा। तुम आंख बंद करके करना भाई। ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ भाई। आवाज आ रहा है क्या, देखो। आ रहा है। हाय एवरीवन, आ रहा है, आ रहा है। दिस इज 10 to 15 minutes of process to find our right block that is holding on. As we are in the process to find out which is the block that is holding us, make sure while you are in the process, you are in the neutral state of mind. The right solution comes when your state of mind is very clear. For that, to get into that state of neutral mind, we have to breathe from both the nostrils. For that, we do Nadi Shodham. Inhale from one nostril, exhale from another, and inhale from the another, and exhale from the another. 2 to 3 rounds of Nadi Shodham. Make sure that you have chin mudra with the another hand, what we call dhyana mudra. After 2 to 3 rounds of Nadi Shodham, make sure your both the hands are in chin mudra, what we call dhyana mudra. Let's start. You can be relaxed, comfortable, and we will start with 2 to 3 rounds of Nadi Shodham.
And now, for 30 seconds to 1 minute, pay attention to the normal breath. While doing that, make sure that your both the palms are in chin mudra, what we call is dhyana mudra, and try to find out and evaluate on the current block that we are working on. What is that one thing that is holding you on the block that we are working today? Block is revenge and block is revenge and hate. Dating, relationship, sexuality. Woman can be a girl also, or when you are anyone. But the dating and other aspects. And now, remove your eye cover. Open your protocol sheet of the current block that we are working on. Read the statement twice and start writing about the block that you have. For those who have finished writing, can message in the chat box. Let's continue to the practice of longer session after the explanation. होने के बाद में मैसेज करना. Okay guys,
होने के बाद में मैसेज करना या फिर ऑडियो। हो गया भाई। हो गया गाइस? Done, 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 done. Okay, very good. So let me tell you my protocol. When it comes to dating, relationship, interacting with high quality women, or expressing my masculinity, I have a revenge and hate towards the guys who try to emote me in front of high quality women and are very good taking my frame naturally, and hate towards the girl who laugh at me during that time. Massive hate, massive revenge kind of psychology. And it has happened to me. Even I'm in coaching, even I'm in that, it has happened to me because when it comes to my natural friends, they don't understand the technicalities, but their value, their status is 10 times bigger than me. So if you are the person who really doesn't understand what is important, looks, money, status, and game, and what the combination of all those things are, attraction, comfort, and seduction, or the combination, I would definitely recommend you go for the Charm Command program. It's like 7 days, and it's absolutely the program that will help you to clear all your doubts. If you have doubts and queries regarding that, pin me, pin me on WhatsApp, pin me personally. The program cost is like 699. Okay. तो गाइस प्रोटोकॉल हो गया। ओ, सबने लिख लिया गाइस? हाँ भाई, लिख लिया। तो अभी एक 30 मिनट्स का एक मेडिटेशन करते हैं एंड देन वी विल रैप अप। आज टैपिंग नहीं। अरे टैपिंग वैपिंग सभी है इसमें। अच्छा, 30 मिनट्स में क्यों है? Hi everyone, this is your brother, your friend Raj, and we are here for this 30 minutes of our ritual. Before we start with the ritual, let's start something with gratitude. Take a 1 minute for whatever you are thankful for. Evaluate your day
your current situation in life, there is something that you are really grateful for. Remember, abundance first start with your own self. If you are not grateful now, then no matter what you achieve, what you have, you will always be in scarcity. So be grateful for whatever you have. With normal breath, with open palms, be grateful. And now it's time for setting the intention. As we are in this new phase of meditation, we already have a clear intention of working on all the 10 protocols: fear, insecurity, lack, jealousy, anger, guilt, shame, limiting belief, revenge or hate, and the last, genetic triad. So this protocol is for fear. So our intention is for fear. You might have various different type of fears that you have listed in your protocol sheet. So your intention about the fear can be to dissolve or vanish the fear that is holding you. For 1 minute, get focus on your protocol. Set your intention to release this fear that is holding your success in dating, masculinity, relationship, woman, and sexuality. For just 1 minute, pay attention to the intention of just releasing, letting go, and dissolving or eliminating the fear that is holding you.
and you have to tap. For the longer statement, you have to tap on the karate chop, our first tapping point, that is the karate chop. You can say the statement loudly or slowly or in your own mind without verbalizing. Depends where you are practicing this ritual. So let's start with the first protocol of fear. While I am saying and reciting the protocol, make sure that you are tapping on your karate chop. Even though I feel an intense fear when it comes to dating, relationship, interacting with women, or expressing my masculinity, your protocol. Your fear, your protocol of fear, whatever you have written on the day one. I deeply and completely accept myself. Even though I feel an intense fear when it comes to dating, relationship, interacting with women, or expressing my masculinity, your protocol. I deeply and completely accept myself. Last time. Even though I feel an intense fear when it comes to dating, relationship, interacting with women, or expressing my masculinity, your protocol. I deeply and completely accept myself. And now it's time to tap on various meridian points, starting from the top of the head to the sequence that we follow. Release. I release this fear of your protocol. I release. I accept your protocol. Release. I let go of my fear of. Release. I release this fear of. Release. I accept this fear of. Release. I let go of my fear of. Release. Release. I accept and let go this fear of. I accept this fear and let go this fear of. Release, release, release. 3 rounds. You can do as your own. Once we finish with 3 rounds, we will start again with long statement. Even though I feel an intense fear when it comes to dating, relationship, interacting with women, or expressing my masculinity, your protocol. I deeply and completely accept myself.
Even though I feel an intense fear when it comes to dating, relationship, interacting with women, or expressing my masculinity, your protocol. I deeply and completely accept myself. Even though I feel an intense fear when it comes to dating, relationship, interacting with women, or expressing my masculinity, my protocol. I deeply and completely accept myself. And now we start with the short tapping of release. Start from the top of your head, covering all the 11 meridian points. Release. I release this fear of. Release. I accept this fear of. Release. I let go of my fear of. I release this fear of. I release. I accept and release this fear of. I release. I let go this fear of. Release. 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 And now gently touch on all your meridian points. Just one round. Top of your head, center of your both eyes, starting of your both the eyebrows, side of your forehead, below your eyes, your upper chin, your lower chin, your collarbone, and your armpit. For 1 to 2 minutes, just evaluate about the emotion and feel. Make sure your body is relaxed. For 2 to 3 minutes, pay attention that how much your emotion of fear is vanishing, going, the intensity of emotion has been reduced. Just observe. And as we completed our protocol, now it's time for our Ho'oponopono prayer for emotional healing of our negative emotion, fear. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Dear fear, I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. My fear,
I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Long Ho'oponopono prayer. I am sorry for allowing fear to control my thoughts and decision. I am sorry for doubting my own abilities and holding myself back from my true potential. Please forgive me for feeding my fears instead of trusting into my inner strength. Please forgive me for choosing hesitation over action. Thank you for showing me the courage comes from within and that I have everything to move forward fearlessly. I love myself for choosing bravery over fear and stepping into my power with confidence. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. Dear fear, I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. My fear, I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. For 2 to 3 minutes, pay attention to your emotion with a relaxed body. Make sure your both the palms are facing upwards towards the sky. And once we have completed with our Ho'oponopono ritual, it's time to dive deep into self-discovery meditation. Remember, when we start with self-discovery meditation, make sure our spine is erect, neck is straight, and there is zero movement in our body. Make sure for entire 20 minutes you are complete statue. Make sure that you maintain dhyana mudra for next 20 minutes.
5, 4, 3, 2, 1. Slowly and gently, without opening your eyes, relax your body. You can rub both of your palms and keep them on your knees, palms open facing towards sky. And with the closed eyes, we will rub both of our palm till they get warm. And slowly, steadily feel the magnetic charge flowing between both of your palm. Bring it closer, take it far. Feel that there is a magnetic electric spark within them. There is some power, a force that is attracting them and repelling them. Imagine that there is a fireball, the spark that is generated within both of your hand. While imagining this thing, I will recite our daily manifestation ritual. I am a magnet for abundance and success. I am always in the right place at the right time. I am attracting best opportunities into my life. Everything happening to me in my life right now serves my highest good, and everything coming into my life aligns perfectly with my purpose. I live my greater purpose every day, growing into best version of myself. I fully embrace my worthiness and receive all the amazing blessings life offers with gratitude, joy and love. Abundance flows to me easily and naturally, and I welcome it with open heart. I receive an abundance of wealth, richness, meaningful relationships, deep connections with high quality and inspiring people, exceptional men, and absolutely beautiful, gorgeous women completely into me. I embody myself with vibrant health and fitness, supported by perfect diet, rest, workout routine, achieving my best physical form. I welcome all these blessings into my life, gratitude, joy, and love. Thank you, universe, for aligning everything perfectly and preparing me to embrace this incredible day with confidence, gratitude, and joy. And that's what my intention is there between both the palms. And slowly, steadily take both the palms in front of the glass of water. You can remove the eye cover, and just looking at the glass, we will have a short Ho'oponopono prayer. I am sorry, please forgive me, I thank you, and I love you. I am sorry, please forgive me, I thank you, and I love you. Once you have charged the water, you can have a sip of water or can drink the entire water from the glass. Thank you for joining us. Stay tuned. In meditation, commitment and practice is what leads to real growth and real transformation. Have an amazing ahead.
Okay, guys. Mm, So, before wrapping up, one important thing for 10 days, we will be working specifically on one emotions, and the meditation will be of 45 minutes. So, make sure that those who are new and those who are attending first time, and in that entire 10 days, हमको सिर्फ यही करना है, फियर के ऊपर एक प्रोटोकॉल लिखना है, फियर के ऊपर एक प्रोटोकॉल लिखना है, उसको प्रैक्टिस करना है ताकि हमारी शीट भरी रहे। अब जैसे फियर के ऊपर हमने एक प्रोटोकॉल लिखा है, अभी एक दूसरा आएगा 10 डेज में, हमको उसको प्रैक्टिस करना है। फिर ऐसा 10 दिन तक चले। 12 डेज में देर आर टू 12 डेज में वी विल वर्क ऑन दिस, बट प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल अंडरस्टैंड, ये प्रैक्टिस हमारी सेम रहेगी 12 डेज में भी। इंपॉर्टेंट थिंग रहेगी हमको, लेट मी गिव यू अनदर, लेट मी शो यू वन थिंग। दिस गाइस, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जर्नल राइटिंग और गोल सेटिंग। हाँ भाई दिक्कत। हाँ, गोल सेटिंग हमको वो 12 एरियाज जो है हमारे लाइफ के, 12 एरियाज के ऊपर हमको लिखना है। कभी कभी लाइफ में क्या होता है ना कि हम डेटिंग के ऊपर फोकस करते हैं तो करियर सरकने लगता है, करियर के ऊपर सरकने पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं तो एक जिंदगी में खालीपन आता है। कभी कभी ये दोनों के ऊपर हमारा अच्छा पकड़ होता है तो हम देखते हैं कि हमारी हेल्थ एंड फिटनेस डिग्रेड हो रही है। अगर ये 12 स्पोक्स लाइफ के आपके लाइफ में सॉर्टेड है तो लाइफ में असली मीनिंग है, जिंदगी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर, फिर जब हम गोल सेटिंग गोल रिव्यू के ऊपर जब करेंगे 12 एरियाज के ऊपर, तब उसके ऊपर बात होगी। लेकिन 10 डेज में हमको ये ही प्रैक्टिस अच्छे से सीखनी है, समझनी है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। दैट्स ऑल, इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके गाइस, चलो, टेक केयर, गुड नाइट एंड फिर आज बाय बाय भाई, थोड़े दिन बाद मिलते हैं अभी। हाँ ब्रो, ऑफ कोर्स, चलो, गुड नाइट। चलो बाय।